हेलो एवरीवन, वायु प्रशांत। आज के इस सेशन नंबर 13 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे प्रैक्टिकल्स है वो हम कौन से प्रैक्टिकल्स देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर में आपको आपको प्रैक्टिकल्स का एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ और अगले लेक्चर में उसको सॉफ्टवेयर में देखने वाले हैं। हमारे जो सॉफ्टवेयर माइक्रोविजन एंड प्रोटीएस उसमें हम देखने वाले हैं सॉफ्ट जो हमारे प्रोजेक्ट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले एक्सटर्नल इंटरफेसिंग विद LPC 2148 कंट्रोलर। फर्स्ट, LED blinking using LPC 2148. Purpose of LED blinking. The LED blinking program is typically the first program written on any microcontroller. It helps verify hardware setup, its basic GPIO functionality, understand pin configuration, and daily mechanisms. LED blinking program LPC 2148 क्योंकि हमारा एक प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट है। इन में ये भी हमारा जो है ये प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट है। देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रोग्राम रहेगा तो इस तरह से हमारा इंटरफेस वगैरह रहेगा हमारे सॉफ्टवेयर में। सेवन सेकंड हम देखने वाले हैं सेवन सेगमेंट इंटरफेसिंग। सेवन सेगमेंट डिस्प्लेस आर द आउटपुट डिस्प्लेस डिवाइस दैट provides a way to display information in the form of images or text or decimal symbols, which is an alternative to the more complex dot matrix displays. Types of seven segment displays. According to the types of application, there are two types of configurations of seven segment display: common anode display and common cathode display. Common cathode configuration. Connection: cathodes are grounded, control high to light up the segments. Common anode configuration. Connection: all anodes are tied to a common cathode VCC. Control apply low to the light of the segment. Power consumption normally less than common cathode because of current sinking. Values to be sent to the ports. जो फॉर्मेट है हमारा तो हम देख सकते हैं सेवन सेगमेंट का फॉर्मेट हम कैसे देखने वाले हैं हमारे इसमें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखने वाले प्रोजेक्ट्स।